in class 10th and from the book First Flight. And the first chapter, which is going to be started today, is A Letter to God. You can see it is written on the blackboard, which is written by Gregory Fluence, who is a Mexican novelist and poet as well. And let me tell you one thing before starting the chapter, that this chapter revolves around very prominent things, that is faith, greed, superstition and dissatisfaction, you must know. So let's get started the chapter. The leading character of this chapter, I must tell you, is Lencho. Okay, so it's very convenient for you if you will also open the book before you. Then we get started. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his face intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So the meaning of this paragraph is that the crest is the word, which is the prominent word, and you have to understand the meaning of this, which is very relevant regarding this paragraph. Is crest means top of a hill, means हिल के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं. अब ये जो लेंचो है उसका जो घर होता है वो क्रेस्ट के ऊपर होता है, ठीक है, और जहाँ से वो पूरे विलेज को देख सकता है और अपने कॉर्न को भी देख सकता है. बिकॉज अभी यहाँ पे जो भी डिस्कशन चल रहा है उससे आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये जो लेंचो है, ही इज अ फार्मर. तो वो बहुत ही ज्यादा ईगर है, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है अपने क्रॉप्स को लेके, लेकिन भगवान भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं. बिकॉज फार्मर्स को क्या चाहिए कि अच्छा क्रॉप्स हो जाए और उसके बाद फिर बारिश हो, लेकिन वो बारिश नहीं हो रही है और इस बारिश का वो बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ऑन, और स्काई को देख के उसे ऐसा फील हो रहा है कि बारिश होने वाली है. इसलिए वो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है वुमन. वुमन मीन्स उसकी वाइफ, बेटर हाफ के बारे में वो यहाँ बोल रहे हैं कि वुमन, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, इट्स माई पॉजिटिव अजम्पशन दैट इट इज गोइंग टू बी रेन, बारिश होने वाली है. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. जो सपर बना रही थी, उन लोगों का खाना बना रही थी, वो वुमन, उनकी उसकी वाइफ, वो बोलती है कि श्योरली, वो पॉजिटिव आंसर करती है कि बारिश जरूर होगी अगर भगवान चाहेंगे तो. द ओल्डर बॉयज were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman got to them all comforted. उनके जो बच्चे होते हैं कुछ खेतों में काम कर रहे होते हैं और कुछ खेल रहे होते हैं, तो उनको वो लोग डिनर के लिए बुलाते हैं. It was during the mid that just as Lencho had predicted, big crops of rain began to fall. अब अचानक क्या होता है, जब वो लोग डिनर कर ही रहे होते हैं तो बारिश आ जाती है, जिसके लिए लेंचो बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा होता है. एक्चुअली लेंचो एंड हिज फैमिली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट रेन. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और वो देख सकता था कि नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड्स, बहुत ही हैवी क्लाउड्स नजदीक आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. एयर बहुत ही ज्यादा स्वीट, बहुत ही प्लीजिंग था. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." जब वो बारिश से अपने आप को वेट करके अंदर आता है तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश रहता है. और आउट ऑफ हिज हैप्पीनेस ही स्पीक्स टू हिज फैमिली, टू हिज वाइफ, टू हिज सन, दैट ये जो बारिश है वो हमारे लिए बारिश नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है. ये हमारे लिए कॉइन्स हैं, हमारे लिए पैसे हैं. द बिग ड्रॉप्स आर
10 cent pieces and the little ones are 5. बोलते जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं बारिश के वो 10 के कॉइन हैं और जो छोटे छोटे हैं वो 5 के हैं. Just look at the fascination, look at the happiness of a farmer. You can imagine that this is the condition of a farmer, how much they wait for the raindrops. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen bones. लेकिन क्या होता है कि बारिश के साथ बहुत ही बड़े बड़े से हेलस्टोन भी आने लगते हैं. बच्चे दौड़ के जाते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए. बिल्कुल फ्रोजन पर्ल्स जैसे, जैसे मोती होते हैं ना, वैसे ही मोती जैसे ये ऐसा लग रहा था कि फ्रोजन फ्रिज किया हुआ ये एक मोती है जो स्काई से गिर रहा है. It's really getting bad now, exclaimed the man. But this is not the good sign for a farmer. The rain is good, but the hailstone is not good. So वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है. I hope it passes quickly. और वो बोलता है सैड होके कि I wish कि ये जल्दी चला जाए, ये जो hailstone है वो चला जाए और बस बारिश रुक जाए. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. लेकिन बहुत जल्दी ये जाता नहीं है. इनफैक्ट ये पूरे हिल साइड में वो स्प्रेड हो जाता है, कॉर्नफील्ड में पूरा स्प्रेड हो जाता है और पूरे वैली पे बस वही हेलस्टोन ही नजर आने लगते हैं. The field was white as if covered with salt. उसकी मेहनत सारी इन वेन होते हुए नज़र आती है फार्मर की, बिकॉज वो जो फील्ड होता है अब ऐसा नज़र आता है कि उसके ऊपर पूरा सॉल्ट स्प्रेड हो गया है. बिकॉज यू कैन इमेजिन द कलर ऑफ द हेलस्टोन इज वाइट, सो इफ यू सी इट विल लुक लाइक salt is spreading all around. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. कोई भी एक भी पेड़ का कोई भी ऐसा पत्ता नहीं था जो कि ग्रीन नजर आ रहा हो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. Besides that white color of hailstone, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था. The flowers were gone from the plants. Lenzo's soul was filled with sadness. वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this." उसने क्या बोला? यहाँ पे एक नया वर्ड आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, वो है लॉकस्ट. लॉकस्ट मीन्स इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म. जो खेतों को डिस्ट्रॉय करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा. वो जो इंसेक्ट होते हैं ना, उसे हम लॉकस्ट बोलते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा, ये तो लॉकस्ट से भी ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग है. इस हेलस्टॉर्म के बारे में वो बात कर रहे हैं. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. एटलीस्ट ये जो लॉकस्ट होते हैं कुछ तो छोड़ते हैं, लेकिन इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न एंड ही इज क्राइंग दैट वी विल हैव नथिंग दिस ईयर. इस साल उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will go hungry this year. और वो बात कर रहा है, सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा एगोनी में. The hill has left nothing. वो बोल रहा है, सोच रहा है और बोल भी रहा है अपनी फैमिली को कि इस साल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो हेलस्टॉर्म है उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. इसी तरीके से उस नाइट को वो स्पेंड करता है. He was unable to sleep. He was deeply in his thought, in his negative thought that we will strive this year. इस साल हम लोग भूखे मर जाएंगे. All our work for nothing. There is no one who can help us. और हमारी मदद करने के लिए भी कोई भी नहीं होगा. We will all go hungry
और इस साल हम लोग बस हंगरी ही रहेंगे. Now the oral comprehension check. You have to just read yourself these chapter whatever I explain you now, and if you have any problem, if you have any query, you can ask me in the comment section. I will be dealing with all the answers, and this is your assignment at oral comprehension check. Whether it is oral comprehension check, but you have to write every question and answer. These are very prominent for you.